हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ टेक्नोफाइल। यहाँ पे सब टेक्नोफाइल है, मैं भी और आप भी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक टेक्नोफाइल है। तो इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ OnePlus 8 6GB रैम वेरिएंट वर्सेस 8GB। दोनों ही वेरिएंट 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, पर प्राइस डिफरेंस 3000 का है और रैम डिफरेंस सिर्फ 2GB का। OnePlus 8 6GB 128GB 42,000 का है, वहीं 8GB 128GB 45,000। यूज़र्स को मेन कन्फ्यूज़न है कि अगर वो 6GB वेरिएंट लेते हैं तो वो लैग या फिर हैंग तो नहीं होगा, इसीलिए मैं लेके आ गया हूँ ये वीडियो। और इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे 6GB वर्सेस 8GB वेरिएंट में बूटिंग स्पीड, गेम लॉन्च स्पीड, रैम मैनेजमेंट गेम लॉन्च के बाद, फिर ऐप लॉन्च स्पीड, फिर से रैम मैनेजमेंट ऐप लॉन्च करने के बाद, देन वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, फिर फाइनली बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कंक्लूजन कि अगर आप 6GB लेते हैं या फिर 8GB तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और टेक्नोफाइल को भी फेमस कर दो, क्योंकि तभी मैं ऐसे और वीडियोस बना पाऊँगा। अगर वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कोई बढ़िया माइक और शांत रूम नहीं है। मैं नॉर्मल ईयरफोन यूज़ करता हूँ फॉर वॉइस ओवर। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दोनों फ़ोन रूटेड है लेकिन सब कुछ स्टॉक है, यानी कि ओरिजिनल रोम और कर्नल है। किसी भी तरीके की कोई ट्विकिंग नहीं किया गया है सॉफ्टवेयर के साथ। टेस्ट बिल्कुल फेयर होने वाला है। रूट मैंने सिर्फ गेमिंग में FPS मॉनिटर करने के लिए किया था। तो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे जज आप होंगे, पर मैं लास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, दोनों ही फ़ोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे हैं।
कंक्लूजन से पहले बेंचमार्क स्कोर देख लेते हैं। मैं बता दूं कि बेंचमार्क स्कोर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे ड्यूरिंग बेंचमार्क फ़ोन कितना हीट था, फ़ोन का कितना स्टोरेज यूज था, तो ये हमेशा थोड़ा वेरी करता है। गीक बेंच स्कोर सिंगल कोड और मल्टी कोड ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही वेरिएंट के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Antutu में 8 GB रैम वेरिएंट वाले फ़ोन का स्कोर इसलिए थोड़ा कम आया है क्योंकि बेंचमार्क के टाइम फ़ोन स्टोरेज 90% फुल था और इससे स्टोरेज की परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर पड़ता है। बाकी सारे स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम हैं और ये कम ज़्यादा होता रहता है दोनों वेरिएंट्स में, तो अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क दोनों फ़ोन सेम परफॉर्मेंस देंगे। तो अब मैं रियल वर्ल्ड यूसेज के हिसाब से कंक्लूजन दे दूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 6 GB वर्सेस 8 GB रैम में क्या कोई गेमिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस है? तो इसका जवाब है नहीं। मैंने ऑलमोस्ट सारे हाई एंड गेम्स दोनों ही डिवाइस में टेस्ट किए हैं, जैसे पबजी, COD, असफाल्ट 9। दोनों में परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। अगर आप गेमिंग के टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड भी करते हैं तब भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम मिलेगा। सेकंड, क्या मल्टीटास्किंग और रैम मैनेजमेंट में कोई इशू आता है? तो जैसा आपने वीडियो में देखा ही होगा, मल्टीटास्किंग में कोई इशू नहीं है। मैंने 5 गेम खोला और 10 से ऊपर हेवी ऐप्स सब बैकग्राउंड में परफेक्टली रन कर रहे थे विदाउट एनी इशू। तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला क्योंकि जनरली कोई भी 5 गेम्स एक साथ नहीं खेलता और इतने ज़्यादा हेवी ऐप्स एक साथ कोई यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या 8 GB रैम वर्थ नहीं है लेना? तो इसका जवाब है बिल्कुल वर्थ है, बट फॉर फ्यूचर प्रूफिंग। अगर आप फ़ोन को 3 साल से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो 8 GB रैम मैं रिकमेंड करूँगा, बट अभी के हिसाब से 6 GB एक स्वीट स्पॉट है और इनफ है अगले 2 साल के लिए, तो कोई इशू नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ टेक्नोफाइल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।